And I'll see you. Hello, good evening everyone to yet another webinar session of CGHS. Today we have with us Dr. Rohit Kumar, who is the Assistant Professor in Department of Pulmonary Medicine in Safdarjung Hospital. Welcome, sir. On behalf of everyone, I welcome you to this webinar and thank you for giving your valuable time for this webinar to all our beneficiaries. The topic today is prolonged cough. Could it be tuberculosis? That is, लंबे समय से खांसी क्या टीबी या क्षय रोग हो सकता है? A few lines about the topic. I would like to say that tuberculosis, or TB as it is commonly called, is a major infection which India is grappling with currently. और इससे संबंधित एक बड़ी समस्या यह है कि टीबी बहुत बार सही समय पे डायग्नोज नहीं हो पाता है। खांसी जो इसका कॉमन सिम्टम है, मरीज को ये लगता है कि खांसी कोई दूसरी इन्फेक्शन के वजह से हो रहा हो या कोई एयर पोल्यूशन के वजह से हो रहा हो या उनके एज रिलेटेड खांसी हो सकती है, सोच के काफी टाइम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके वजह से सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता एंड कॉम्प्लिकेशंस इसके वजह से हो सकते हैं। तो without further ado, I request sir to start with the webinar. Just a notice to all our beneficiaries that please, whatever queries or doubts you have, please type it in the chat box and we will take it at the end of the session. Sir, please. Thank you. Good evening, everyone. Topic जो है is about कि chronic cough क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा. So एक common case है जो कई बारी मेरी OPD में आता है. आपने भी कोई ना कोई कभी ऐसे पेशेंट से मुलाकात की होगी. So वो है क्या? 37-year-old male smoker. इसको presents with cough with expectoration for the last 6 weeks. 6 हफ्ते से इसमें खांसी है, बलगम की दिक्कत है. And initially had fever, sore throat. उसके कुछ दवाई ली, and उसके बाद the sore throat has improved partially with treatment. Now he also has a history that in the last 6 weeks he has, last 4 weeks he's lost 5 kgs weight. काफी significant weight loss हुआ है, which he did not plan for. And जब पूछा तो he says there's a history of pulmonary tuberculosis for which he took complete treatment. 2010 this patient has already been treated for tuberculosis. So now what are the possibilities that come to your mind? ठीक है, what could it be? या वो क्या सकता है? And the first thing is viral है क्या? This is everybody, आजकल everybody is asking us virus है क्या, कौन सा virus है? But 6 weeks, it's a bit long. There's something known as a post-viral cough. Again, आजकल भी we see a lot of patients who continue to have cough with expectoration even though the viral, the fever subsides, but they still have this. We call it a post-viral syndrome. When COVID is back, there are a couple of cases that have been seen recently. There is long COVID, 6 weeks se chal raha hai. Could it be just that? Could it be a pneumonia? That is also a possibility. He's a smoker, 37 years. There, a lot of people have what is it called smoker's cough. He smokes, thodi bahut khasi hai. Is he developing a chronic condition like COPD? It's possible. Pre-COPD, young age, but still he can have pre-COPD at this age. Could it be something as bad as cancer? That is also a possibility. We are seeing a lot of cases of cancer at a young age. But what is more likely, and when you live in a country like India, TB बहुत common है. आप सोच नहीं सकते कितना common है. You will, in your life must have come across a person of TB who's suffering from TB or who's had treatment for TB. So let's talk about TB. This is a big problem that we're facing. What is tuberculosis? ये है क्या? It is a disease caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. एक कीटाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे बीमारी होती है. और ये दो प्रकार की है. यू हैव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसमें फेफड़ा इन्वॉल्व है, लंग टीबी, और यू हैव एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी व्हिच इज आउटसाइड ऑफ द लंग्स एंड दिस कुड बी इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स. किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, स्पाइन को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है.
One thing that you should realize is not everyone infected with TB germs becomes sick, and this is what makes it very difficult. हर किसी को टीबी का एक्सपोजर है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको टीबी है या उसको टीबी के सारे लक्षण मिले, एंड इसी की वजह से इस बीमारी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो देयर इज अ पर्सन जिसके टीबी बिल्कुल नहीं है, जीरो टीबी बैसिलाई नहीं है, तो वी से नो टीबी. बट देयर आर दोज जिसमें टीबी बैसिलाई है बट छोटा है, it is not growing, it is not active, so we call it latent TB. And then there are those जिसमें TB bacilli बहुत ज्यादा है, जिसमें symptoms आएंगे, उसको symptoms हो रहे हैं, तब हम कहते हैं TB disease. So we have latent TB and TB disease to talk about. Now, what are as I said, latent TB में people with have latent TB do not feel sick, they do not have symptoms, they cannot spread. They can have latent TB for years and years together. There's a small amount of TB germs in their bodies, and once the immunity goes down, this can come up. So इनमें क्या है, इनको कोई लक्षण नहीं मिलेंगे, बट इनको कई सालों तक ये कीटाणु उनकी बॉडी के अंदर अंदर है, एंड जब भी इम्यूनिटी कम होगी ये वापस आ सकता है. एंड देन देयर इज टीबी डिजीज. इसमें जर्म्स इतने ज्यादा हैं, उसके टिश्यू को इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि मरीज को लक्षण मिलेंगे. And a patient of latent TB can actually turn into a TB disease, and what is worrying us. We have over the years been managing TB disease. TB disease का तो National Tuberculosis Control Program तो 1960 से चल रहा है. But now we have focused कि हम latent TB को भी manage करें. So a person with latent TB has a small amount of TB germs, cannot spread, does not feel sick. इनमें tuberculin skin test positive आएगा. दिस इज अ टेस्ट जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को टीबी का एक्सपोजर है क्या, पेशेंट को क्या टीबी का बैसिलाई है. जरूरी नहीं कि उसको एक्टिव इन्फेक्शन हो, बट वो लेटेंट टीबी हो सकता है. एंड देयर इज अ ट्रेंड कि हम इन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं. तो ये आपने देखा होगा कि कई टीबी के पेशेंट्स को आजकल ऑफर किया जाता है कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी कुछ दवाइयां दी जाए ताकि उनको भी इन्फेक्शन ना हो. देन देयर आर पेशेंट्स ऑफ टीबी डिजीज, उनमें खूब सारा एक्टिव टीबी होता है जो टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा होता है, वो स्प्रेड भी कर सकता है फिर इज पल्मोनरी. पेशेंट्स यूजुअली सिम्टम्स बताएंगे, वेट लॉस बताएंगे, एंड उनका भी टीबी स्किन टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, साथ ही साथ उनके बलगम में भी टीबी आएगा, उनके एफएनएसी में भी टीबी आएगा, बाकी टेस्ट में भी टीबी रिफ्लेक्ट होगा, एंड इनको तो डेफिनेटली हमें ट्रीट करना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. दिस इज द सेम थिंग. थोड़ा सा है, सिक्लूडेड है, एक एरिया में है, ग्रो नहीं कर रहा बट है, यानी कभी भी एक्टिव हो सकता है. एंड जब ये एक्टिव हो जाता है, ये टीबी बैसिलाई पूरी बॉडी में फैलता है, पेशेंट्स को सिम्टम्स कराता है, दिक्कत कराता है. सो व्हाट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. होता क्या है कि अगर पेशेंट को टीबी हो तो क्या होगा. एक इन्फेक्शियस केस है, एक स्मॉल डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. एक इन्फेक्शियस केस है, वो कई लोगों को, कई कॉन्टैक्ट्स को के संपर्क में आएगा. He comes in contact with a lot of many other non-infected patients, and उसमें से कुछ cases को TB हो जाएगा. So some of them will become an infectious case, some of them will become a non-infectious case. You put it in a different perspective. You have exposure to TB. कईयों को तो चलो infection नहीं होगा. Many will not develop an infection, but some will. Amongst those, it will become dormant, which means they can very well never develop TB, but in few it will be active. If it is treated, well and good. These patients can be cured. But if untreated, 50% die within 2 years. This is about children. That's a scary picture. These many people can die of this disease. Now, how does it spread? ये फैलता कैसे? So the most potent route of spread is inhalation. A person who already has the bacilli will be coughing out, and with that cough, he releases this bacilli which the other person inhales. So the inhalation of organism present in fresh cough droplets or in right sputum from an open case of pulmonary tuberculosis is the most common route. इस बलगम जब ये मरीज खांसेगा, जो टीबी बैसिलाई निकलेगा, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है. The other thing is ingestion. So किसी का स्प्यूटम इंजेस्ट किया, या कई बार पेशेंट्स अपना ही बलगम सटक लेते हैं. So when they swallow their sputum, वो पेट में जाके पेट का भी टीबी करवा सकता है और दिक्कत करा सकता है. Then rarely you have inoculation and transplacental. These are very rare routes, but from a public health perspective, inhalation is the most common thing that we're worried about and that we're trying to curtail. And who is at risk of developing TB disease?
Now, people at high risk of developing TB generally fall in two categories. Those who never had immunity or antibodies against it, or did not have an active cell immunity against it. Unko, when they get it for the first time, they can get TB. And then there are certain medical conditions which weaken the immune system. So या तो पेशेंट को कभी आज तक टीबी जर्म्स हुए नहीं, जैसे ही उसको एंटर करेंगे तो उसको काफी रिस्क होता है. एंड जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उसमें भी या तो वो लेटेंट टीबी होगा जो रिएक्टिवेट कर जाएगा, या उनको भी ये टीबी लग सकता है. तो ऐसे क्या केसेस हैं? HIV पेशेंट्स जिनका सब्सटेंस अब्यूज, जिनको खासकर आईवी ड्रग्स अब्यूज करते हैं, पेशेंट्स जिनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चल रहा है फॉर सम chronic disorders like rheumatoid arthritis or Crohn's disease, patients who are undergoing organ transplant, उनको कई बार immunosuppressive agents दिए जाते हैं जिसकी वजह से immunity comes down. Patients with severe kidney disease, सारे जो किडनी के मरीज होते हैं उनमें ये खतरा ज्यादा होता है. Head and neck cancers, again during cancers आपकी immunity comes down and risk of developing TB is there. Patients with diabetes, specifically if the diabetes is poorly controlled, it brings down the immune system. And diabetes में जब immunity down होगी तो भी TB का खतरा बढ़ जाता है. Then there are certain drugs like corticosteroids which are known to reduce the weaken the immune system. So if the patient is on steroids, किसी को वाइसलोन या prednisolone की गोली काफी लंबे टाइम से चल रही है तो उनका TB का रिस्क बढ़ जाता है. Silicosis is a condition in which silica dust exposure से patients are at high risk of developing tuberculosis. And then patients with a low body weight, because they are nutritionally so poor, unka risk of developing infections is very high. So in all these conditions, you will find that the patient is at a risk of developing uh, these infections. So who are the vulnerable populations? हमारे population में कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये खतरा ज्यादा है? एक तो poor and crowded areas, जहाँ पे you have poor ventilating settings. तो वहाँ पे खूब सारे लोग एक ही छोटे से एरिया में होता है, वहाँ पे एक मरीज को भी होगा, कईयों को फैला देगा. And this you see a lot with migrant populations, prisoners, minorities, refugees. वहाँ पे camps जो होते हैं उसमें we see this. Even one patient, once he has TB, he will spread it to a lot more. TB infection, HIV infections, malnourishment, alcohol and drug abuse, diabetes, इन सब conditions में बहुत common होता है. And another vulnerable population that we have is women and children. 500,000 women and over 65,000 children die of TB every year. And because the parents die, we have what is known as, which is a horrible thing, which is we have TB orphans. So that's something that we see, and it's really a preventable thing. Now, what are the possible TB disease symptoms? इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? Latent TB में तो कुछ नहीं होगा, but जिसके symptoms होंगे उसको काफी सारे symptoms वो report करेगा, जिसके active disease है. So there is night sweats, उसको रात में खूब सारे पसीने आएंगे. वीकनेस और फैटीग, वो पेशेंट हमेशा आपको बताएगा कि उसको कमजोरी लगती है. कफ लास्टिंग फॉर लॉन्गर देन 3 वीक्स, आपने कई बार सुना होगा 3 हफ्ते से ज्यादा अधिक खांसी या 2 हफ्ते से ज्यादा अधिक खांसी में टीबी का जांच करवानी चाहिए. देन फीवर, बुखार पेशेंट्स को आता रहता है. वी ऑफन कॉल इट इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, माइल्ड साइड फीवर कॉन्स्टेंटली रहता है. एंड देन देयर इज वेट लॉस. पेशेंट्स विल हैव अ decrease in appetite, उनको भूख कम लगेगी, and they have significant weight loss at times. They can at times report with pain in the chest, छाती में दर्द के साथ भी ऐसे मरीज आ सकते हैं. There may be chills, कपकपी लग सकती है. Patients will say they have lost their appetite, उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, and कभी-कभी they have coughing of blood in their sputum. So this is known as hemoptysis. कभी-कभी उनके बलगम में खून आता है. And वो उस लक्षण से घबरा के कई बार they come and take treatment from us. So we can describe this as pulmonary tuberculosis and extra pulmonary tuberculosis. हम एक तरीके से इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से लक्षण लंग के टीबी की वजह से हैं और कौन से लक्षण बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की वजह से. सो अगर एक खांसी है जो लंबी चल रही है, बैड कफ that lasts for 3 weeks or longer, pulmonary tuberculosis is definitely a consideration. This 3 weeks मतलब people should remember. एंड इसका रीजन ये है कि 1-2 हफ्ते की खांसी चलो वायरल इलनेसेस में हो जाती है, और 3 हफ्ते हो गए हैं तो आपको जरूर कि अपना टीबी का जांच करवाना चाहिए. पेन इन द चेस्ट, कफिंग ऑफ ब्लड और स्प्यूटम, एंड देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ऑल दीज आर फीचर्स वेयर जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में दिखते हैं. ठीक है, खांसी, छाती में दर्द,
बलगम में खून एंड सांस लेने में दिक्कत. Then there is extrapulmonary TB, and as you can imagine, it will be there are so many organs to be involved. Extrapulmonary tuberculosis में फेफड़ों के बाहर खूब सारे ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. सो एक फेफड़ों के अराउंड देयर इज अ लाइनिंग व्हिच इज नोन एज द प्लूरा. कभी कभी देयर इज फ्लूइड दैट अक्यूमुलेट्स हियर. जो ये फेफड़ों के बाहर जो ये झिल्ली होती है, इसमें कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है. ये भी एक टीबी का लक्षण है. कभी कभी मेरे पास कई पेशेंट्स इसके आते हैं कि उनके छाती के अंदर एक गांठ आई होती है, लिम्फ नोड्स बड़े हुए होते हैं. So as a pulmonologist, I get a lot of referrals for patients who have lymph node tuberculosis, and that is lymph nodes of the lungs. So they're on the inside the chest. You have these lymph nodes which are enlarged, which can be seen well on a CT, and it's maybe we have to evaluate them. Then there is cervical lymph node tuberculosis. तो there are lymph nodes जो पूरी बॉडी में होते हैं. पूरी बॉडी में एक ग्लैंड है, lymphatic gland. जब ये बढ़ जाता है तो भी टीबी का एक लक्षण हो सकता है. Then there is CNS tuberculosis, in which the brain or the spine can get involved. So you have एक पेशेंट के दिमाग में भी टीबी दिक्कत करा सकता है. उनकी जो वर्टिब्रा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इस इट हैज डैमेज दिस वर्टिब्रा. ये ऐसे एक स्पाइन पे डिफॉर्मिटी करा देता है. एंड देन इवन पेट में जीआई ट्यूबरक्लोसिस होता है. यू कैन हैव जेनिटोजेनिटरी ट्यूबरक्लोसिस. इसेंशियली स्किन में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है. Any part of the body can have tuberculosis. So briefly we'll discuss about the symptoms. TB meningitis में पेशेंट्स को सिर दर्द हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, हाई ग्रेड बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, नेक स्टिफनेस हो सकती है, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूजन में हो सकता है, एंड हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है. इन abdominal tuberculosis पेट में दर्द होता है. Pain abdomen is the most common presenting feature. In TB spine, they have localized back pain for more than 6 weeks, and child, they usually will not tell you, but you will find that they have night cries and inability to walk. तो एक रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा होगा काफी हफ्तों से, एंड बच्चों में ये देखा गया है कि वो बता नहीं पाते, बट अगर वो रात को ज्यादा रो रहे हैं या चलने में दिक्कत आ रही है तो वो ये टीबी स्पाइन का लक्षण हो सकता है. Then bone tuberculosis, depending on the site that is involved, there is pain, swelling and loss of movement. तो इसमें दर्द होगा, सूजन होगी, एंड हड्डियों को हिलाने में दिक्कत आती है. देन आई में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. Ocular TB can present with red eyes, blurred vision, photophobia, irregular pupil, eye pain, floaters and flashing lights. And आई से भी हमारे पास कई रेफरेंस आते हैं कि कहीं टीबी की दिक्कत तो नहीं है. उसमें ऐसी चीजें जब दिखती हैं कि एक आंख में रोशनी डालने में दर्द हो रहा है, या आंखों में दर्द हो रहा है, या कुछ फ्लोटर्स से दिख रहे हैं, तो ऐसे में भी टीबी पॉसिबिलिटी है. Then there is urinary tuberculosis, which presents with increased frequency and urgency of urination, burning sensation while passing urine, burning micturition, and a reddish colored urine. And usually a UTI, urinary tract infection, if not treated with a course of antibiotics, then also you should be worried about urinary tuberculosis. तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, रात में उठना पड़ता है पेशाब करने. पेशाब में थोड़ा ब्लड होता है, यूरिन रेडिश कलर की हो सकती है. एंड अगर मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है भी, अगर वो एंटीबायोटिक से रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो भी हमें टीबी के बारे में सोचना चाहिए. देन देयर इज जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, मेल्स एंड फीमेल्स में करेगा. इट कैन कॉज पेन, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, एंड इट कैन कॉज साइनसेस इन द एरियाज. सो that is also a possibility of extrapulmonary tuberculosis. Now, once we see such cases, we make a presumptive diagnosis. जब हम ऐसे मरीज को देखते हैं, हम एक presumptive diagnosis बनाते हैं. So, in pulmonary tuberculosis, presumptive diagnosis is made when there is any of the symptoms. This includes cough for 2 weeks, fever for 2 weeks, significant weight loss, hemoptysis, and any abnormality on the chest radiograph. But in extrapulmonary, it becomes a little difficult. So, you have certain organ-specific symptoms, and you will have certain constitutional symptoms. What are these organ-specific symptoms? Well, swelling of the lymph node, pain in the joints, neck stiffness, and about constitutional, you'll have constitutional symptoms where you'll have significant weight loss, fever, and night sweats. So, फेफड़ों के टीबी के भी एक presumptive diagnosis. Just by the history and X-ray, you can make a presumptive diagnosis. आपको history के लक्षण clear cut मिल रहे हैं, आपको X-ray में changes मिल रहे हैं, that confirms the diagnosis of pulmonary tuberculosis.
it makes a presumptive diagnosis. And then extrapulmonary tuberculosis may be based on organ specific symptoms and constitutional symptoms, you can make a diagnosis, presumptive diagnosis of TB. But एक बारी presumptive diagnosis is not a final diagnosis. तो इसके लिए we start evaluating the patient. हम patient की थोड़ी जांचें कराएंगे. अगर लंग्स का लग रहा है तो हम एक एक्सरे कराएंगे, अगर कहीं और का लग रहा है एक सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, पेट का है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं. So there are a lot of investigations, imaging investigations, which give us a help. And based on this, we will decide कि क्या है. अगर lungs का है, it's simple, बलगम का जांच करवा लेंगे. अगर कहीं और का है, lymph node का है, तो उसमें एक सुई डाल के there is a test known as FNAC, fine needle aspiration cytology. तो हम उसका भी एक जांच करा सकते हैं. So imaging tells us कि कौन से एरिया का इन्वॉल्वमेंट है. Then based on that, we will try to sample that area and confirm a diagnosis of tuberculosis. Then there is, final diagnosis is actually based on a lab diagnosis, जिसमें हम TB bacilli को ढूंढते हैं. So, but you can do a ZN staining, which is acid-fast staining for TB bacilli. ये जो आपको जो ये bacilli दिख रहे हैं इस smear में, sorry, these bacilli are TB bacilli, which can be seen on a peripheral smear. And इसकी another staining that is done is fluorescence staining. तो उसमें ये बिल्कुल bright दिखता है. So it's easy for you to diagnose. Your clinician can order this test. ये test आपका डॉक्टर ऑर्डर करके ये bacilli ढूंढ सकता है. फिर there is skin में a Manteuff's test. Now this is a test which tells us कि latent TB है या TB का exposure है. But this does not mean कि अगर this test is positive कि TB है. So I get a lot of referrals. कई लोग patients आते हैं कि जी हमारा Manteuff's positive है. That does not mean that you have definite TB. It just tells me that you may have latent TB. I still need to evaluate you. Then there are cultures, which is the gold standard test. You can have liquid media, solid media, LG medium, MGIDs, and quite a few culture-based tests which are available. And then there are molecular tests, जिसमें हम TB का DNA ढूंढ के we are very sure कि TB हमें sample में मिल गया. So to break it down, एक है कि आपको पहले देखना है कौन सा organ involved है, उसको किसी तरह sample करना है. बलगम का बड़ा simple है, but अगर बलगम नहीं भी है तो किसी और एरिया से उसको आपको डॉक्टर sample कर सकते हैं. Based on that, they can confirm. कभी-कभी क्या होता है, you have a patient who has extrapulmonary tuberculosis where say brain tuberculosis. Brain को sample नहीं कर सकते. CSF they can do, but अगर brain के अंदर है, तो based on a clinical, radiological or a presumptive diagnosis also, we can come to a diagnosis of TB. And then we come to a stage of treatment. The best treatment is now the dots-based treatment, which is available free of cost to all people. So everybody who has TB can go in and go to a dot center and get treatment for tuberculosis. So with this, I just want to talk about few common myths about TB. TB के बारे में लोगों के मन में काफी doubts रहते हैं, and these are certain things that I want to address. So one thing is everybody with TB is infectious. लोग सोचते हैं जिसको भी TB है वो हमें TB करवा सकता है, उनसे दूरी करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं. So a person can transmit TB when the bacteria is there in the lungs or the throat, but the bacteria are in other parts of the body, such as the kidneys, the spine, or lymph nodes. The person is unlikely to transmit the disease. And even if they have pulmonary tuberculosis, after treatment, within the intensive phase of treatment, the thing will completely disappear. So we need to be very clear. We should not discriminate against patients. आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक फेफड़ों में या गले में टीबी नहीं है तो खास के वो टीबी फैल नहीं सकती. अगर वो गले में है, लंग्स में है, चलो फैल सकती है, बट उसमें भी अगर आप मरीज का इलाज करना शुरू कर दो, 2-3 हफ्ते में देखा गया है कि पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है. उसका बलगम में वो बैसिलाई डिसअपियर कर जाता है, बैसिलाई को मार दिया जाता है दवाइयों से. अगर वो टीबी उनको टीबी लिम्फ नोड्स का है या स्पाइन का है या हड्डियों का टीबी है, ऐसे में वो स्प्रेड नहीं करेगा, तो आपको पेशेंट से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. देन दी अदर मिसकंसेप्शन इज टीबी जेनेटिक. कई लोग सोचते हैं कि कई फैमिलीज में देखा गया है क्या ये जेनेटिक्स की वजह से है. सो दिस इज अ मिथ. This misconception may have arisen because people living in the same household often develop the disease. Now we know this now that they develop the disease not because they share the same genes, but because they are living in close proximity, and that is why the spread is more. कई लोग ये सोचते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से है, ऐसा नहीं है. कई लोगों जो घर पे मरीज साथ में रहते हैं उनको टीबी हो जाता है, बट उसमें जेनेटिक्स का रोल कम है. इट इज
बिकॉज कि वो एक साथ पास में रहते हैं तो टीबी फैलता जल्दी है. कुछ लोग आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो क्योर फॉर टीबी. This is a myth. TB is treatable. For individuals with an active infection, doctors tend to prescribe a combination of antimicrobial medications for 6 to 12 months, and that can cure the TB. So कुछ लोग ये सोचते हैं कि टीबी का कोई इलाज ही नहीं है. वो सोचते हैं कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो इसका कोई इलाज नहीं है. बट ऐसा नहीं है. आपके डॉक्टर्स आपको एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं, जिससे इसका पूरी तरह इलाज हो सकता है. The other common myth is that TB affects people of low-income countries, or people who are from a poor socioeconomic background. Uh, this is a myth. TB can affect people anywhere in the world. It can affect anyone, regardless of the socioeconomic status, age, or gender. And I remember there was a patient who had sputum-positive tuberculosis, but he was saying, "How can I have it? I'm eating well. I'm perfectly fine. I don't want to interact with that many people." I have to explain it to him. It can happen to just anyone. We're living in an endemic country where this can happen to just anyone. कई लोग ये सोचते हैं कि टीबी सिर्फ जो पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं उनको ही होता है. ऐसा नहीं है. सबसे अच्छे लोगों को, सबसे एफ्लुएंट लोगों को भी टीबी हो सकता है. Despite their socio-economic status, their age, the gender, it can affect just anyone and everyone. We have to be very careful about it. Many people believe that TB is always fatal. This was possibly true years and years and centuries ago. Not anymore. This is not true. TB can be fatal without treatment, but with modern medicines, doctors can successfully treat the illness. कईयों को ये लगता है कि टीबी की वजह से डेथ ही होती है, इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में देयर आर मल्टीपल ड्रग्स आर अवेलेबल. इवन जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है उसके लिए भी नई दवाइयां बन गई हैं, जिससे टीबी का इलाज किया जा सकता है. Another common myth is TB affects the lung. I just spoke about it. This is not true. Pulmonary TB is the most common form, but can affect also parts of the body such as the bones, lymph nodes, and the brain. कई सोचते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में टीबी होता है, बाकी शरीर में टीबी की कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये पूरे शरीर को करवा सकता है. फेफड़ों को ज्यादा कराता है, उसमें कोई डाउट नहीं. मैं एक फेफड़ों का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास सारे केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही टीबी देखता हूँ. ऑर्थोपेडिक्स वाले भी टीबी देखते हैं, गैस्ट्रो वाले भी टीबी देखते हैं, गायनी वाले भी टीबी देखते हैं. सारी स्पेशलिटीज को टीबी मैनेज करना पड़ता है. तो व्हाई इज टीबी सच अ सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज? इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो दिक्कत क्या है कि टीबी इतना भीषण बीमारी बन रखा है. One is transmissibility of TB through air makes everyone susceptible. क्योंकि ये खांसने से फैल जाता है, बहुत आराम से फैल सकता है, ये एक दिक्कत है. Vulnerability is more and treatment response is poor in populations that are impoverished, age of extremes, and who have difficult access to care. And हमारे देश में नहीं, कई देशों में ये प्रॉब्लम है कि लोगों को एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है. At times the diagnosis can be challenging, specifically in extrapulmonary cases. जब टीबी फेफड़ों का हो, चलो बलगम से आराम से डायग्नोस किया जा सकता है, एक्सरे से आराम से डायग्नोस किया जा सकता है. बट जब टीबी बाहर का हो तो डायग्नोस करने में थोड़ा दिक्कत आती है. एंड लेट डायग्नोसिस, एंड कई बार पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, एंड उसमें मोर्टेलिटी हाई होती है. So these are all the causes which make it a difficult, for years, centuries, decades we've been working on it. We have a tuberculosis control program for so many decades. क्यों हम उसको कंट्रोल करने में इतनी दिक्कत आ रही है? Is because of all these factors. In fact, if you look at it, the early evidence of TB has actually been seen in certain mummies also. The TB bacilla has been found. It is as ancient as time itself, many people say. Then TB is described in medical literature as a single disease in 1820s. The term tuberculosis was made in 1834. They even had a conference. The first international conference was in 1867, but it was identified in 1882 by Dr. Robert Koch. And based on this, in fact, we had the 23rd ko we had the World International Tuberculosis Day, the World Tuberculosis Day. It was because of this, of Dr. Robert Koch, who had identified tuberculosis.
Uh, the skin test had been developed by Dr. Montoux. It is known as the Montoux test, which is used for diagnosing latent tuberculosis. And over the years, there's a lot of development. So TB कोई नई बीमारी नहीं है. It's been there since ancient times. पुराने जमाने से ये है. मम्मीज में भी इसके बैसिलाई मिला हुआ है. 1980s में वेस्टर्न लिटरेचर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न लिटरेचर में 1980s में इसका पहला डिस्क्रिप्शन था. टर्म 1834 में बना था. 1867 में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इस पे. 1882 में पता चला था कि ये बैसिलाई की वजह से हो रहा है. एंड आप देखोगे कि लास्ट के कई सालों में इसमें बहुत प्रोग्रेस किया गया है. कई इनफैक्ट आप एक चीज नोटिस करोगे तो द फर्स्ट ओरल माइक्रो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो इसके लिए ड्रग बनी थी दैट इज 1952. From there to now we have reached a stage जहाँ पे we have a lot of drugs available and a lot of diagnostic tests. So uh, we are now at a time where we have molecular test 2020 में मिल गया था. And we are still progressing. New drugs are being made. New diagnostic tests are being made for this. So what is next? The problem is we need to understand how big of a problem we're dealing with. It's not like we've not made, we've not improved. We have. Over the last 20 years, we've made a significant improvement. But there's still more to be done. Because the number of cases is this much. ऐसा नहीं है कि हमने इतने सालों में कुछ नहीं किया. बट इतने सालों में हमने टीबी के केसेस इतने ज्यादा हैं, थोड़े कम कर दिए हैं, अभी भी हमें उसको और कम करना है. टीबी इज द 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. इससे पहले इट यूज्ड टू बी द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. सो वी हैव डन अ लॉट, but it's still the 13th leading cause of death, and it is preventable, and it is the second leading infectious killer after COVID-19. In 2021, an estimated 10.6 million people had tuberculosis. And MDR remains a multi-drug resistant TB remains a problem. In पहले से हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया था, बट इन 2021 केसेस थोड़े बढ़ गए थे. एक्चुअली ये सोचा, दिस केम एज अ सरप्राइजिंग डेटा. हमने ये सोचा था कि लोग अगर मास्क पहन रहे हैं कोविड में तो शायद टीबी कम होगा, बट लोग पीपल वर यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स आल्सो. तो स्टेरॉइड की वजह से the reactivation of TB from latent TB also occurred. Now, if you look at the global impact of TB, TB occurs in every part of the world, and most of the cases occur from the Southeast Asian region, then WHO African region, and WHO Western Pacific region. So if you look at it, 8 countries account for more than 2/3 of the global, and usme India is high up. This is what we really, as we need to work on. Global TB अगर आप देखा जाए, इंडिया एंड कुछ कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, एंड वी इंडिया में भी, दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन हाउ टू deal and tackle with this problem. So TB is one of the world's top health challenges. More than 2 billion people, that is equal to quarter of the world's population, are infected with TB. Each year there are 9 million new cases and 1.5 million deaths, and this is a really sad thing. Despite our best efforts, this is an unacceptably low rate of decline. हम जितना सोच रहे थे कि हमने जितना प्रोग्रेस किया है, जितना हम चाहते थे कि ये डिक्लाइन कर जाए, ये उतना डिक्लाइन नहीं कर रहा. So इसका रीजन है a lot of people are not diagnosed or not treated. They do not take, उनका access to healthcare is poor, and the proportion of missed cases is the same each year. So this is where we need to focus on. ठीक है. Most vulnerable population, जैसे मैंने पहले बताया था, there are children, women, the poor, the malnourished, people living with HIV, the indigenous populations who have poor access to healthcare, and the very elderly. And because of this, हम एक पेशेंट को ट्रीट करें तो हम कई लोगों को वो स्प्रेड रोक सकते हैं, बट जब हम एक पेशेंट को ट्रीट करना मिस कर देते हैं तो वो बहुत फैल भी जाता है. So this is what we need to focus on. India has right now the largest number of tuberculosis patients in the world. India का आप देखो, it has 27% of the the global population का of TB patients. So total number of people in the world suffering from tuberculosis is 1 crore. Total number from India is 26.9 lakhs. Almost 27% हमारे पास है. And deaths due to tuberculosis fell from 1.6 million in 2007 to 1.5 million. So we were making some progress actually, but because of COVID, थोड़ा
डायग्नोसिस में भी थोड़े इश्यूज हुए, पीपल हैव पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोग डॉक्टर्स के पास उतना जा नहीं रहे थे, एंड कईयों को स्टीरॉइड्स मिला जिसकी वजह से देयर वाज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस व्हिच बिकेम एक्टिव. So if you look at the TB disease burden in India, 2021 witnessed a 19% increase from the previous year of TB notification. And as per the global TB report, the estimated incidence of all forms of TB in India for the year 2020 was 188 per 1 lakh population. The estimated mortality is 37 per 1 lakh population. And the important thing to realize is this is all preventable. सो कई जो अनुमान लगाए गए हैं उससे ये पता चला है कि 1 लाख पॉपुलेशन में 188 पेशेंट्स हैं एंड 37 डेथ्स हैं. एंड ये काफी, ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज ऑल प्रिवेंटेबल, इसको हम रोक सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स एंड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी एक इशू है जिसको मैनेज करने के लिए a lot of things are being done. Now, earlier we had what was known as the stop TB strategy, जिसमें हम बात करते थे कि we will stop TB transmission. But now we are becoming more bold. Recently, it has been announced we have now the end TB strategy. So this is what we are working on, and science is doing its part. Diagnostic test improve करे जा रहे हैं, दवाइयाँ improve करे जा रहे हैं. पहले MDR TB के लिए you had injections which had to be given for 18 months. Now we have short-term all oral regime available for selected patients. So there's a lot of progress that is going. But what is really needed is कि हम patients अपने symptoms लेके जल्दी से जल्दी doctors के पास जाए. They are able to diagnose it as early as possible, and they are able to treat them effectively. And वो treatment को छोड़े नहीं. That is another problem that people leave their treatment. So the vision of end TB strategy is a world free of tuberculosis, 0 deaths, 0 suffering. So the goal is to end the tuberculosis epidemic which has been going on for years and centuries. What we are looking for is a 95% reduction by 2035 of TB deaths, 90% reduction of TB incidents, and 0 TB affected families facing catastrophic costs, which means जो TB orphans होते हैं वो ना हो. So the time for action is now, and we need to work on it together. We cannot say कि ये उसकी जिम्मेदारी है, ये करेगा. इसमें सबको भागीदारी लेनी पड़ेगी. आपके पास कोई मरीज है जो आपके जान पहचान में है, आप प्लीज उसको गाइड करिए. आपके पास आपको खुद को ये दिक्कत आ रही है, आप प्लीज आके अपना ट्रीटमेंट नहीं, पहले अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराइए, पुष्टि कराइए, अगर बीमारी है तो अपना ट्रीटमेंट कराइए, पूरा ट्रीटमेंट कराइए, एंड मोटिवेट अदर्स. So we need to, as a community, this is not just a doctor or a health ministry who has to treat these patients. Everybody has to participate. So case finding involves if the patient, anybody, you or your loved one or somebody close by, you're living in your vicinity, has these symptoms, has been coughing for a long time, please ask them to get themselves evaluated. Have access to healthcare, let the doctor run a couple of tests, be sure about the diagnosis, and they can then treat you. And another thing that we need to strengthen with TB, we even need to strengthen the HIV/AIDS program. So with this, we recently on 23rd March 2023 had the World Tuberculosis Day, in which we said we can end TB. And this is what we need to focus on. And with this message, I'd like to leave, and I'd like to answer any questions that are there. So. Yeah, thank you so much, sir. That was a very detailed and wonderful presentation, very relevant to our beneficiaries. We had a few queries posted in the chat box, and I had compiled them, so maybe we can go through them one by one. So one of the queries was we had discussed about how certain population is more vulnerable, like chronic kidney patients, the elderly. So are there any general precautions that they can follow to minimize the risk of TB in them? Certain precautions. That's an excellent question. Really nice question, because and a very relevant question. So what we are working like in children, अगर बच्चों में ये होता है, we suggest BCG vaccination. That's very advisable. BCG should be always be there. Then coming to having a good immunity. Now, even if you have a CKD, you should still try to get a good nutritional intake, have a good immunity if possible, and try to address those factors. Nutrition is, CKD patients का ऐसा नहीं है कि kidney damage है, that is where
they have poor nutritional intake. They because of other comorbidities, they become at additional risk for this. So nutrition is very one important point. Vaccination with BCG, there is a lot of research going on in getting TB vaccines. Hopefully, we'll have them in the near future for adults also, but BCG vaccination in children. And wearing a mask. If you're going out into a crowded area, actually, I'll share this with you. When we had the COVID pandemic, we had expected possibly TB transmission will come down because everybody is wearing a mask and they were following cough etiquettes and cough hygiene. But surprisingly, it went up because possibly the latent TB cases were there, and जो 2020 में cases diagnosed नहीं हुए because hospitals were also, OPDs were shut, वो 2021 में diagnosed हुए. So that's one reason there. But yes, wearing a mask when you're going out will actually save you from TB also. Thank you, sir. Another query was regarding the chances of reinfection. Or a lot of times, people who have a history of tuberculosis again land up with a reinfection. What are the factors which increase that risk, and the importance of completing the treatment in such a case? So are my slides still visible? I'll just go back and Yes, show sir. you. Yes, sir. They are visible. So this is a very common scenario, and there are two things: are they having a reinfection or are they having a new infection? So is it a relapse कि पहले वाला जो टीबी था उसका पूरा कुछ बच गया and वो relapse कर गया, या कि टीबी फिर से हो गया? Both are possibilities that we face, and this is a very common clinical scenario that a patient who's already taken full dose treatment for a full duration may still have it. Now, this is why we insist that patients during their first instance should go for a full treatment. होता क्या है कि when you take a treatment for, instead of taking a 6-month treatment, you take a 2-month treatment. It will kill the bacilli, but कुछ dormant bacilli will still remain. So when we give a full course of treatment, we make sure that dormant bacilli are there. But having said this, you will still come across patients जिनमें the infection, there can be a reinfection or they can have a relapse. Whenever the immunity comes down, say they develop an infection like HIV, they have substance abuse, there are certain, they may have rheumatoid arthritis, उसके लिए they are started on biologicals, and उसके वजह से TB can relapse. That is a possibility. Those who जिनका organ transplant है उनको भी हो सकता है, kidney disease को हो सकता है, lung cancers में हो सकता है, diabetes, and specifically if the diabetes is poorly controlled. So if they can control the diabetes, the risk of getting TB again comes down. Then corticosteroid treatment चल रहा है, use it for the shortest duration possible. अगर उसको कम टाइम के लिए दिया जाए, usually corticosteroids are safe. And silicosis, low body weight, nutritional element होता है. These are all things that increase the risk. So if a patient has TB 10 years ago, he's having good nutrition, वो ठीक रहेगा. But if he starts eating poorly, immunity comes down, the infection can come back. Thank you, sir. The third query is kind of a combination of multiple queries. One is like a lot of, especially in the elderly, there is yeah, there's something called an allergic cough that they generally tend to have, maybe with change in winter. And also there is a myth that possibly a myth that the cough associated with tuberculosis always is productive. ऐसा कुछ है नहीं. So can you please light upon that, please? So I'll tell you this. Very cheese, so you are very right. There are a lot of causes of cough. In fact, that is why I began with this case. This is a this is a common clinical scenario. कुछ भी हो सकता है. So my message to the beneficiaries is, please do not ignore your symptoms. आप ये मत सोचो कि ये वायरल है, चलो हो जाएगा, या मौसम बदला है. Technically, even if you're having worsening of breathlessness with the seasonal change, you should get yourself evaluated, get a pulmonary function test done, so that we know, are we dealing with COPD? So there are a lot of the smokers cough or elderly may cough, allergic cough. Please don't diagnose on yourself. Go to a doctor, एक pulmonologist या किसी specialist को आप दिखाइए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे एक बारी सलाह ले लीजिए कि ये कुछ और तो नहीं, before you write it off. Now, having said this, you're very right. TB में जो cough होता है, usually it is with production, with sputum production, but it is a myth to say कि dry cough is not because of TB. It can definitely be because of TB, and in fact, as a pulmonologist, I get a lot of referrals because of this. कि patients को खांसी है लेकिन बलगम नहीं आ रही, and CT में there are lesions there.
वी डू समथिंग नोन एज अ ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज। हम एक दूरबीन को फेफड़ों के अंदर जाके वहां पे थोड़ा पानी डालते हैं और जो पानी रिटर्न में आता है उसमें टीबी बैसिलाई ढूंढते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जब हमारे पास सैंपल नहीं आ रहा। सो एज आई सेड, टीबी में प्राइमरी टीबी में सैंपल ढूंढना सिंपल है अगर बलगम आ रही है, बट अगर नहीं आ रही, देयर आर अदर वेज टू सैंपल द लंग और सैंपल द अदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स। Thank you, sir. So basically, a very important take-home message is never self-diagnose. अगर Yeah. कभी भी लंबे टाइम के लिए खांसी है, please show a doctor and get it diagnosed correctly. So there were a few queries regarding patients who are already on long-term medication with respect to tuberculosis on anti-tubercular drugs, and a lot of them have various side effects. Like some of them are toxic to the liver, etc. So certain any watch out signs that they should be careful about when they are taking ATT. So very true, but there's a message, and when I start ATT, most of my patients will say ये बहुत hard दवाई है, ये बहुत गर्म दवाई है. It is not true. Please be very clear on this. The first line drugs that we give have a very very low side effect profile. The safety profile is very nice. There are पहले वो injections होते थे which had to be given for a long time, उससे थोड़े issues थे. उसमें भी we now have an all oral regime for multi drug resistant pathogens. So having said this, the message should be कि yes, the medicines are very safe. Still, some patients do develop symptoms. I'm not denying it. Symptoms होते हैं, कुछ को side effects होते हैं. So एक होता है कि most of the side effects are seen in the first 2 weeks of starting treatment. तो I usually tell my patients कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे 2 हफ्ते में एक LFT करवा लीजिएगा, NFT दिखा लीजिएगा, या if they are already having some disease, तो मैं उनको 2 week का close follow up रखता हूँ. 2 weeks में अगर symptoms नहीं आए and the patient is tolerating the medicine, most of them will improve and without any hitch. Now अगर 2 weeks में they have some changes, then we monitor them. So अगर liver में कुछ changes आ रहे हैं, there are ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत changes है, it is okay. But we say कि if the enzymes are elevated more than 3 times the upper limit of normal, तब we intervene. So intervene करके हम वो दवाई बंद करके एक दूसरी regime try कर सकते हैं, which may be liver safe, or a दूसरी regime which is kidney safe, depending on what the patient symptoms are. So the message that I want to say is, first of all, medicines इतनी कोई ऐसी गर्म मेडिसिन है या नुकसान करती है ऐसा नहीं है. दवाइयों से डरने की जरूरत नहीं, बीमारी से डरने की जरूरत है. दवाइयाँ आप टाइम से लीजिए. दवाइयों के बाद भी अगर दिक्कत आती है तो दवाइयाँ चेंज की जा सकती हैं या उसमें साथ कुछ ऐड किया जा सकता है कि आपको साइड इफेक्ट्स ना. Thank you, sir. Also, a few queries were regarding the skin test that you had mentioned. We a lot of them are familiar with tests for sputum, X-rays, and CT. Can you please throw some light on the TB skin test, please? So the TB skin test was the Mantoux test which had been developed long ago. And what this involves is there is a TB. So this is one of the tests that is there. Mantoux में what we give is we give an intradermal injection. Skin के अंदर, skin के नीचे नहीं, skin के अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं जिसके अंदर ट्यूबरकुलर प्रोटीन होता है. तो जिन जिन जो पेशेंट इस टीबी बैसिलाई से एक्सपोज हुआ होगा उसमें इम्यूनिटी होगी तो वो इसमें अगेंस्ट एक रिएक्शन दिखा देगा. ये जो स्किन टेस्ट होता है ये टेल्स अस कि पेशेंट हैज बीन एक्सपोज टू टीबी. इसका जरूरी नहीं कि अगर ये पॉजिटिव आए तो मुझे टीबी है या टीबी की बीमारी है. हो सकता है लेटेंट टीबी हो सकता है मुझे टीबी का एक्सपोजर हुआ हो. तो ये बस ये दिखाता है कि दिस इज एक्सपोजर टू टीबी. So this is known as a Mantoux test, which involves an intradermal injection of a purified derivative which has the tubercular protein in it. And once we do this, once we give this injection after 72 hours, इसके around we look for induration and inflammation. And if we find that, we measure it in millimeters, and that gives us a rough idea of how of the patient being exposed to the TB bacilli. So all patients इनको TB पहले हुआ होगा. You know, this case, the case that I talked of 2010 में he has TB. उसका भी मैंटोक्स करूंगा पॉजिटिव आएगा, बट इट डज नॉट मीन इसका अभी भी टीबी है. उसके लिए आई स्टिल नीड टू लुक फॉर द either look for the DNA of the TB bacilli or to look for the bacilli itself. Thank you, sir. So all that completes most of the queries that we had received in the chat box. I once again thank sir for such a wonderful presentation and for emphasizing a lot of relevant points which are important for the general public. Thank you so much, sir. I thank all the participants for the interaction and for being such active listeners.
Thank you all. Thank you once again. We meet next month with another webinar. Till then, take care, everyone. Stay safe. Thank you. Thank you. Discuss.